Hello everyone, this is Vikas. So welcome to SMBD Marine Academy. So our today's topic is negative power. Again, always, mostly and frequently asked question by your GME interviewer. मैं each and every students को बोलता हूँ पीडीएफ पढ़ने से काम नहीं होगी. ऑलरेडी मार्केट में SMBD Marine Academy जैसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, आ चुके हैं, जहां पर फर्स्ट बैच स्टार्ट होगी. अब वेटिंग है रिजल्ट्स की. यस, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव एंड यस ओनली पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पावर. सो हाउ टू डिफाइन पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पावर. अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कर आप डायरेक्ट वो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. सो हाउ टू डिफाइन पॉजिटिव पावर इन फ्रंट ऑफ जीएमए इंटरव्यूअर. सर, the electrical energy, the flow of electrical energy from source to load is called positive power. For me, what is source? Sirji, for me, generator or alternator is source. And now for me, what is load? Sir, load means resistive load, inductive load, capacitive load, or your motor, electrical devices or other electronic equipments are load. The flow of electrical energy from source to load is called positive power. And yes, what is negative power? Now the flow of load to source means the flow of electrical energy from load to source is called negative power. Yes everyone, what is negative power? The flow of electrical energy from लोड टू सोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव पावर. अब यहां पर जब ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं वहां पर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि हाउ एक्चुअली थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स, हाउ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स, हाउ डबल रिवॉल्यूशन फील्ड थ्योरी वर्क्स. ये सारी थिंग्स मैं एक्सप्लेन करता हूं जहां पर मैं प्रैक्टिकल उनके सामने रोटर, प्रैक्टिकल रोटर, प्रैक्टिकल स्टेटर शो करता हूं. अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो प्लीज हमारे टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. अब मैं यहां पर आपको नेगेटिव पावर को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से शो कर रहा हूं. यस, प्रैक्टिकल एग्जांपल. सपोज कैपेसिटर. यस, टू टर्मिनल. यस, कैपेसिटर. व्हाट इज कैपेसिटर? सपोज दिस इज माय टू प्लेट्स. In between two plates, yes, dielectric material is there. You know what is dielectric material? Yes, what is dielectric materials? Dielectric materials may be your vacuum, maybe ceramic, glass. Clear? These are the dielectric material. Means bad conductor of electricity. It's called dielectric material. Now these are the capacitor plates. So you know na capacitor. Now define capacitor. Sir ji, capacitor stores electrical energy and delivered it when it is required. This is the basic definition of capacitor. Now please comment it below. Capacitor की application on ship. Yes, these are the frequently, always and mostly asked questions by your GMA interviewer. Application, always remember. So suppose this is my capacitor. Ab now tell me, electrical energy is generated by which component? Sir ji, my electrical energy generated by source or alternator or generator. For me, sir ji, my source is alternator. For me, sir ji, my source is generator. Generator generates electricity. Ab now this is my capacitor. तो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स capacitor receives electrical energy from where? From source only. Actually there is one electrical circuit diagram, means electrical flow diagram. शिप पे डायग्राम होता है जो मैं ऑफलाइन लेक्चर्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ. एक्चुअली योर जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड that electricity goes to, yes, switchboard, then switchboard to bus bar. Ab now bus bar, there is one incoming feeder and there is one outcoming feeder. Clear? Ab now bus bar stores that electrical energy and distribute it to the various loads like motor and other various electrical and electronics load. Getting or not? So ये whole story होता है. Clear? So always remember one more thing आपको बताना चाहूंगा. 1.1 किलो वोल्टेज प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये कार्गो शिप में जनरली होता है. एंड 3.3 और 4.4 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैसेंजर शिप में होता है. क्या आप क्रूज लाइन ज्वाइन करना चाहते हो? क्रूज लाइन ज्वाइन करना चाहोगे तो वहां पर 3.3 किलो वोल्ट और 4.4 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है.
which component is responsible to produce 3.3 or 4.4 kilovolt electrical energy? Sir ji, my alternator or generator. So simple है, your capacitor stores electrical energy means capacitor के पास कुछ electrical energy आ रहा है, capacitor के पास कुछ electrical energy आ रहा है, तभी तो वो store करेगा. Getting your note? अब now and deliver when it is required. अब now tell me capacitor is a load or source? Sir ji, for me capacitor is load. अब now my sentence is capacitor deliver electrical energy when it is needed or when it is required. अब now load is delivering electrical energy. Load is delivering electrical energy. So in this way your capacitor is the best example of negative power. And one more mathematical thing से भी मैं आपको explain करना चाहूंगा. Suppose now tell me the AC current. Yes, sinusoidal wave, you know na. Suppose this is my voltage. So now tell me, in case of capacitor current leads voltage. Current is leading to the voltage. ठीक है, तो suppose this is my voltage and this is my suppose current. Clear? This is my current and this one is my voltage. अब now this white colored sinusoidal wave represent voltage and this yellow color sinusoidal wave represents current. अब now tell me what is positive power here? What is power first of all? Sir ji, power is equal to product of voltage and current. Power is equal to, this is what called instantaneous power. Which power? Instantaneous power is equal to the product of voltage and current. अब now tell me, suppose this is my current, this is my current, sir ji. अब now with corresponding to this current, this is my voltage. Current is positive, voltage is positive. Now the instantaneous power is positive into positive, result is positive. So instantaneous power is positive power. अब now suppose take the example of this point. Clear? Take the example of this point. Now sir ji, tell me, this is my again sinusoidal wave of current and this is my sinusoidal wave of voltage. अब now tell me, this is my current I and this is my corresponding to this current only, this is my voltage V. अब now what is instantaneous power? Product of voltage and current. Now voltage is V, current is I. So product of negative into positive, always remember the result is negative only. So in this case power is negative power. Clear? Always remember. तो ये होती है ब्यूटी. Always remember, आपकी इंटरव्यू मैकेनिकल भी होगी, इलेक्ट्रिकल भी होगी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरव्यू होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट अगर आपको जल्दी लाना है, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, देन जॉइन एसएमबीडी एकेडमी. इस तरीके के छोटे छोटे लेक्चर्स हम रेगुलर बेसिस पे आपको डिलीवर करते रहेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड इंटरव्यू. थैंक यू.